Welcome back. We are in match number 2. Andhra Pradesh up against Bihar. And look at that for a start from Andhra Pradesh. Winning the toss. Deciding to bat first. And straight away a sign of aggression from the batters. And we are truly up for an exciting contest. Another great delivery. Go and get that. It's going to be a boundary again. Cracker of a shot. In the context of the match, so far, run scoring in the second inning was tough. Take it. Nine without a wicket in 3 overs. And the way they're going, they're really going to be making it tough. They were saying that 200 is on. The captain was saying Karuna Kumari, the B1 player, 2 boundaries. And again, and put down by the fielder. Could have been a terrific catch, but that is not to be. It's all happening out there. Straight away, plenty of actions from the first ball itself. Don't go anywhere. If you've just joined in and watching this live, you're up to something special. Make no mistake. Karuna on strike again. Gets it well, gets it past the fielder. It's racing away. It's a boundary. Exceptional hitting. Well. Just post lunch, and we were thinking about taking a little breather, easy going. This is how the match should be. And Karuna Kumari says, "Come on, take a look at me. This is definitely not the way I'm going to bat. I'm going to score my runs as quickly as possible." She's done that terrifically well. 1 over done and dusted. Take a look at the score. 20 runs on the board straight away. Fantastic start this is after winning the toss and deciding to bat first. Terrific shot. Good dive from the fielder. Timely dive. Oh, this is exactly why you like this form of the game, and to the fullest. I mean, the fielders, 3 categories. Eligible. Wow. You've seen to jump that timely, and they managed to do that thanks to the listening capacity they've got. This is not, I think, trying to play the reverse, finds the fielder, who does well. Another single. Just to remind you that any run that Karuna will score, it will double because he's a B1 player. The score double, we all know that. Talking about this, an amazing set of players for India. It's so important in the context of taking cricket for a good cause. Sweeps it well, finds the fielder. Interesting display of batting so far. Today, normally closes the first half.
Played up easily over the fielder's head and have shown aggression twice as it goes on. Brothers selected to bat first. This is exactly where they are. Time for another reverse. Time missed by the batter. Didn't quite manage to capitalize on it. Last ball coming up in this over. They're already batting and batting with terrifically well. Karuna batting on 22 from 6 and getting a move on in each and every possible way. With that, 2 overs completed. It's 27 without a wicket after winning the toss and deciding at first are Andhra Pradesh. .37 without a wicket. Last ball coming up. They're up to a flyers all of a sudden. Very slow from the bowler this time. Wow! Excellent, excellent stop. And this is how she shaped a boundary there. Well, and applauds from the rest of the fielders, and rightly so. Bihar fielders applauding that. IndusInd Bank has contributed to India's growth by serving over That 41 rightly million so. customers Sangeeta, the through bowler, 3,000 plus branches and was trying to ATMs, restrict the transforming opposition over now. They're already 2.5 million lives through living its on a high inclusive diet. banking and community Check this score to initiatives. From supporting 39. Paralympians to championing blind The end of cricket, 3 we overs. continue to celebrate strength beyond boundaries. Way outside the upstream on the slow side. He hit that over the fielder. Said some work for the fielder. That's our third. And she does really well. She comes back for the second. Mika batting on 10 from 8, and with that 2 run, it becomes 12. In fact, it's Karuna Kumari batting on 33 from 11 and hitting it over the fielder's head on the offside through the squarer region.
Three without a wicket. What next? Swept it away in front up square. Some chance for the fielder who does extremely well there. This is extraordinary bit of a fielding. We've seen it all. Bihar looks like a strong fielding unit. Not just once, not just twice, not just one fielder, not just two fielder. Plenty of them, and they're quick wires, spring chickens on the field. Again, a powerful shot, and again, it's going to be stopped. Take a note of that. The score, which might have looked like 60, looks like 46. They're still marching ahead, no doubt about that. But one thing is sure. That with this fielding effort, if they bowl well and they make sure that the bowling team comes back, at one point in time it will, because the fielders are backing it up, then you have a game on your hand. And Karuna Kumari, this time keeping it away from that, from the batter and way outside the off stump, and umpire calls it a wide. The score moves on to 47 with that. Great shot. Oh, chance again. And tough. Not the safe, I have to say. And there's two ways to look at that. One is to think that should be a wicket. The other is to stop a boundary. The fielder thinking to stop it for a boundary, and rightly so. Fine. Rushing away. And it's going to be a boundary. Fantastic. Karuna Kumari, the star of the show right now. Don't go anywhere if you're watching this match. Sees a B1 player playing a gem of an inning. IndusInd Bank has contributed to India's growth by serving over 41 million customers through 3,000 plus branches and ATMs, transforming over 2.5 million lives through its inclusive banking and community initiatives. From supporting Paralympians to championing blind cricket, we continue to celebrate strength beyond boundaries.
IndusInd Bank has contributed to India's growth by serving over 41 million customers through 3,000 plus branches and ATMs, transforming over 2.5 million lives through its inclusive banking and community initiatives. From supporting Paralympians to championing blind cricket, we continue to celebrate strength beyond boundaries. One of the premier commentators from the land of Atagad. And talking about premium, this is the shot that will lead to an extraordinary milestone, reaches the milestone with a fantastic boundary. And with that, ladies and gentlemen, Mika is turning it on, and so was Karuna Kumari. 43 for one batter, 28 for the other, 72 on the board, and they are looking for a very big total. Even watching this match and watching this after having a lunch, we'll talk about that. The batters are belting it out. They are just doing it like you do it on the pitch when it matters the most. Belting it out. Sweeping, sweeping, and sweeping. The way they're sweeping, they might sweep this match too. It is an extraordinary display of batting, and starting from ball number 1. Kumari comes in. Anu Kumari, B1 bowler. Now watch out for her. Already 77 on the board. They're going at 12.83 per over. In this a little hot and humid, I have to say. We don't say that here in January, but today it looks a little hotter than it normally looks like in this part of the world, especially considering the fact that it's been very cold in this year. Nice shot. Very sweetly timed, and once again another display of batting that you'll take away with you.
Brilliant, absolutely brilliant. Bisecting those two fielders and keeping it away from the fielder at back put point. In fact, third man. Mika batting on 37 and making it look like playing a video game almost. 37 from 20 deliveries with 5 boundaries, 185 the strike rate. What a game he's having. Very slow, and that is a spectacular shot. There's protection, only a single though. Very excited for the powerful shot down the ground, but that was not to be. So what is more important to look at here in this kind of a game is that the back half of the cricket field, the third man, the fine leg, the square of the wicket regions, they're more in business than the long on and long off. And thanks to that, you always see two fielders outside the circle on the onside in those directions. They're all going up. They're all going up. Bihar doesn't look like they're going to give an inch. Even after conceding, to be honest, the 82 runs, Bihar still looks like they're up for it, and quite rightly so here. Karuna Kumari batting on 43, Mika batting on 13. Karuna Kumari will be on strike, 43 from 18. Anu bowls it on the onside. Karuna wanted to smash it on the onside by bringing that popular sweep shot and bringing that fine leg onto the play, but that was not the case. Another dot ball. 82 now, 82 with that, with 2 deliveries to go. I have to say, it's a good little comeback from Bihar after losing the toss, especially in the last 2 overs. They put the run rate down a little bit. Got a bit of bat. No, says the umpire. No bat involved. It's going to be a wide. That'll help Andhra Pradesh. Nice shot. Just going to be a single, all right. The way they're going, they're going to be reaching to 249. I'll tell you what this tournament means for the players. We'll be having a bit of conversations with all the important members with whom this tournaments become so popular and so highlighting. Terrific shot for a run. And with that, 7 overs done and dusted. It's 86 without a wicket. IndusInd Bank has contributed to India's growth by serving over 41 million customers through 3,000 plus branches and ATMs, transforming over 2.5 million lives through its inclusive banking and community initiatives. From supporting Paralympians to championing blind cricket, we continue to celebrate strength beyond boundaries. Priyanka also wide straight away. The strategy for Karuna Kumari will be, of course, being a B1 player up against another B1 player. It's Mika will be on strike rather. 39 from 23. A little technical glitch in the scoring. Stay with us, guys. We're going to be getting some exciting thing out there. There's no doubt about that. Mika 39 from 23 deliveries, 169 the strike rate. Another wide. The idea should be to keep it on the stump. And the kind of a player Mika is, I've seen her really using the depth of the crease really well and sometimes suppling across to play it on the onside. So if you keep it on the stump, by any mean, if it means and miss by inch or 2, straight away you can get that wicket. That is exactly where I think you got to be a little careful bowling.
Priyanka Kumari, the B1 bowler. Swept it away. She's done that. She's done that to Apan, and don't forget that is going to be getting another boundary from that. 41. If complementing each other and going bang bang and still holding the perception of staying there for a long period of time is an art. Take a look at these two players here in Nimpur Sports and Cricket Club. We're watching something special. Kind of an inning where you put your first bite of dahi bada aludam and you say, all right, stop. Take a look at this innings first. I can have my snack in between the overs, of course. Great shot, great shot. This time on the onside. Wow. Wow. There's one person stealing the show. The man, in fact, the women on strike right now. Goes on to 47 from 25 deliveries. So who will be reaching to that milestone first? Karuna was ahead. Mika got the strike. She completely turned it around. Now, can she get that milestone that we're all talking about? We've already got a century. Are we up for another half century here? Mika on strike. Still 3 deliveries to go. Priyanka. Ball seat very slow and hammered it away. Hammered it away, and with that magnificent boundary, Mika reaches to the 50. Half century and Mika, well done. Team playing the first game of the 6th edition of the IndusInd Bank National T20 tournament for visually impaired women cricketers in India. And there we go. It's Mika for Andhra Pradesh with a half century to remember. 26 from just 51 deliveries with 8 boundaries. .51 from 26 deliveries rather, and 100 comes up with that as well. What a way to get to 100 for your side when you get to a 50. You remember that more. Cricket is a team's game. I mean, you play well, you remember, but when the team wins because of your knock, you remember it more. You remember it forever. That's the thing. 100 inside 8 overs. They're saying they're going to be getting 200. The way they're going, they're making 250 look possible now. It's going to be a wide. That helps again. Here in Nimpur Sports and Cricket Club ground, and we have seen plenty of matches being played at this venue. It's a very popular venue in this part of the world, in Cuttack. And the best part of the venue, I feel, is the people passing by while there's a game going on. We're going to the office, you stay for 2 overs, you go to the office, you come back, you stay for 2-3 overs. That's the kind of a venue this is. Still, there are people with their bikes, with their cycles, with their cars, still halting on the ground. Terrific shot again. And one shot she can play all day, all night. And she is probably has taken the copyright of the shot now, Mika. That reverse shot, that reverse sweep now can be called as Mika sweep, the way she has played. .105, last ball to go. Don't be surprised if she once again tries for that reverse. No, it's on the onside. Powerful shot, fielder takes it. This time she's going to be keeping. And how's that for complementing each other with a single? We'll talk about that. Take a look at the score. It's high. 105. And with that single, 106 without a wicket. IndusInd Bank has contributed to India's growth by serving over 41 million customers through 3,000 plus branches and ATMs, transforming over 2.5 million lives through its inclusive banking and community initiatives. From supporting Paralympians to championing blind cricket, we continue to celebrate strength beyond boundaries.
106 without a wicket at the end of 8 overs. I do have with a young boarding commentator from also from Cuttack, Athagar, of course, to be very precise. For some reason, Cuttack keeps on producing commentators, bunch of cricket commentators. I still remember 2018 India versus Sri Lanka, visually impaired cricketer at the same venue. Nimpur Sports and Cricket Club were at the roof covering this game. We'll talk about that. Meanwhile, another boundary, this time from the bat of Mika as well. She's turning it down. I mean, she's making this bowling look like almost she's playing a video game right now. So easy. Yeah, so I remember doing it with the senior commentator of Odisha, Nishan Majithya. And again, plenty of cricket commentators here produced, just like Odisha is famous for producing visually impaired cricketers. I think we have to say Odisha is also famous for creating commentators, cricket commentators. And what a coincidence it is that there is a visually impaired tournament happening and all the commentators of Cuttack are around, almost like all the junior ones, not the pros. Another one, single. Yes, I have with me Bibek. Of course, he'll be bringing you the Hindi commentary for all of you. विवेक कैसा लग रहा है अभी तक 111 रन बिना कोई विकेट के अभी नवी ओवर प्रगति पर और जिस तरीके की गेंदबाजी अभी हो रही है हम ये देख सकते हैं कि ये जो रन है बहुत आगे तक जाएगा और स्वीप करने की कोशिश एक और सिंगल स्वीप बहुत अच्छी तरीके से की है और स्वीप एक बहुत ही लोकप्रिय शॉट है अब मेरे हिसाब से गो टू शॉट्स जिसे बोलते हैं T20 क्रिकेट हो और ख़ास तौर पर विजुअल इम्पैक्ट क्रिकेट में रिवर्स स्वीप हो या पैडल स्वीप हो या नॉर्मल स्वीप हो तो इसलिए फाइन लेग पे और थर्ड मैन पे हमेशा डीप पे फील्डर होता ही है वाइड होगा ये तो किस तरीके से गेम को आप देखते हैं निमपुर में पहले आप बताइए कि निमपुर में आपका ये डेब्यू मैच है और एक नेशनल टूर्नामेंट में कितने एक्साइटेड हो कितने खुश हो थैंक यू पहली बात तो ये कि जिस हिसाब से अभी तक मैच चल रहा है मतलब जब टॉस के वक्त हम पूछ रहे थे कैप्टन आंध्र प्रदेश उन्होंने बताई थी कि हमें 200 के आसपास की स्कोर वो देख रहे हैं और उनका ये मानना था कि हमारे बल्लेबाजी जिस हिसाब से है वो देख रहे हैं कि हम अच्छी खासी अगर बल्लेबाजी यहाँ पर कर रहे हैं तो दूसरी तरफ गेंदबाजी को ना मतलब उसका नज़रअंदाज करते हुए वो अभी तक तो 114 अभी तक स्कोर हो चुका है 9th ओवर की खेल अभी चल रहा है लेकिन बल्लेबाजी की बात अगर किया जाए कंप्लीट हम कह सकते हैं कि कंप्लीट डोमिनेंसी देखने को मिला है बैटिंग टीम की तरफ से एक बार फिर से वही दिशा में और इस बार फील्डर से चूक हुई और एक और बाउंड्री आंध्र प्रदेश को मिलता हुआ कमाल की बल्लेबाजी और इस तरीके की बल्लेबाजी अगर आप करते हैं और बहुत देर तक करते हैं जैसे आपने बोला कि स्कोर आप इतने आगे तक ले जा चुके हैं कि यहाँ से अगर आप नॉर्मल क्रिकेट भी खेलें तो आप एक बहुत ही बड़ा टारगेट देंगे बिहार को हमने देखा पहले मैच में क्या हुआ ओडिशा बहुत ज़्यादा एक रन रेट के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे और 240 के आसपास किए थे और गेंदबाजी लाजवाब रही थी निश्चित तौर पर क्रिकेट तो जारी है और जिस तरीके की क्रिकेट जारी है अभी आखिरी गेंद इस ओवर की गति में परिवर्तन कट करने की कोशिश अपील क्या कहते हैं अंपायर अंपायर ने मना कर दिया सीधा ये आउट नहीं है तो एनर्जी तो है उत्साह है लेकिन अभी तक वो ब्रेक थ्रू मिल नहीं पा रहा है और दोनों ही बल्लेबाज अभी तक वहां पर है मौजूद और इसी के साथ 9 ओवर हुआ खत्म 122 रन बिना कोई विकेट के आंध्र प्रदेश टॉस जीते हैं आंध्र प्रदेश ने उसके बाद बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था और यहाँ पर है
IndusInd Bank has contributed to India's growth by serving over 41 million customers through 3,000 plus branches and ATMs, transforming over 2.5 million lives through जी its विवेक, तो inclusive हम बात तो banking करेंगे and community मैच से, initiatives. लेकिन मैं From supporting बताना चाहूंगा Paralympians individual to cricket championing बहुत blind एक cricket, लोकप्रिय we क्रिकेट हो continue चुका to है। celebrate और strength खासतौर पर beyond महिला क्रिकेट अभी boundaries. विश्व कप हाल ही में भारत ने जीता, 4 ओडिया खिलाड़ी उनमें थे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप किस तरीके से जुड़े हुए हो, आप ये मैच लगातार देखते हो, क्योंकि ये एक तरह का क्रिकेट है जो सबको साथ लेकर के चलने की वादा करता है। जी, आपने जिस हिसाब से बताया कि ये कम्प्लीटली डिफरेंट है। मतलब हम अगर नॉर्मल क्रिकेट को देखें तो फिर हम आते हैं इस सेक्शन को। यहाँ पर कुछ रूल्स होते हैं जो जैसे कि हमें पता है कि B1, B2 और B3 ये तीन ही कैटेगरीज होते हैं, जिसमें से एक मैच के बारे में अगर अगर बताएंगे तो B1 की जो प्लेयर्स है वो मिनिमम आप 4 प्लेयर्स। जी हाँ, यहाँ पर खूबसूरत सा टर्म स्पीड हुआ है, यहाँ पर चौका जरूर, 4 रन की बढ़त हो गई है यहाँ पर। और बैटिंग टीम में मतलब बल्लेबाजी के बारे में अगर बात किया जाए, आंध्र प्रदेश जिस हिसाब से अभी तक उनकी दोनों ही ओपनर्स और ये 50 रन आ चुकी है। करुणा कुमारी जो B1 कैटेगरी से है उनका भी अर्धशतक हो चुकी है यहाँ पर। दोनों ही सलामी बल्लेबाज, करुणा कुमारी 55 पर मिक्का 69 और हावी हुए हैं। अभी तक विपक्षी दल की जो भी गेंदबाज है उनकी कोशिश हो रही है कि कहीं से भी ब्रेक थ्रू दिलाने की, लेकिन नो बॉल आई है यहाँ पर। और उसके बारे में मैं बता रहा था कि आपको कि B1 की जो कैटेगरी होती है, 4 प्लेयर आप रख सकते हैं, कम से कम 4 प्लेयर्स होने चाहिए B1 कैटेगरी से। और B2 और B3 में से आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 प्लेयर्स को लेकर उतर सकते हैं मैदान पर। वाइड गेंद हुई है यहाँ पर और अच्छी तरीके से स्वीप कर रहे हैं हर एक गेंद को। और कोशिश ये है कि दोनों ही सलामी बल्लेबाज जितना हो सके, मतलब पार्टनरशिप आई है यहाँ पर, पार्टनरशिप आई है। और जिस हिसाब से अभी तक चल रहा है, दोनों ही बल्लेबाज कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके, क्योंकि पहला इनिंग्स है और उन्हें भी पता है जितना स्कोर वो बोर्ड पर बोर्ड पर देंगे तो वो विपक्षी दल मतलब जब गेंदबाजी करने के लिए आएंगे तभी उनके लिए ये इजी हो सकता है। करुणा कुमारी मिका क्या इनिंग्स है, स्वीप किया है फिर से। फील्डिंग साइड अच्छी तरीके से हर एक गेंद को कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन फील्डिंग लाजवाब हुई है यहाँ पर। लेकिन बल्लेबाजी अच्छी हुई है हर तरफ से अगर देखा जाए। गेंदबाजी जिस हिसाब से चल रहा है वो कोशिश कर रहे हैं कहीं से भी विकेट दिलाने की, लेकिन बल्लेबाज क्या खूब खेला है इस शॉट को, फिर से अच्छी तरीके से प्लेस कर रहे हैं हर एक गेंद को और आसानी से बाउंड्रीज आ रही हैं। और फिर सिंगल के ऊपर इतनी अच्छी से काम हो रहा है कि स्कोर कहीं से भी ऐसा नजर नहीं लग रहा है कि डॉट गेंद की जो गुंजाइश है अभी तक नहीं हुई है। 10वीं ओवर का खेल अभी तक चल रहा है, लेकिन आंध्र प्रदेश टॉस के वक्त अधिनायक के साथ जब हम बात कर रहे थे तो उन्होंने बताई थी कि हम 200 के आसपास देख रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जब अगर अभी तक 139 आई है स्कोर और इस हिसाब से अगर बल्लेबाजी चल रहा है तो फिर स्कोर 200 से भी ज़्यादा हो सकता है। यहाँ पर गैप में थी शॉट, अच्छी कलेक्शन, लेकिन 2 रन, बहुत ही उम्दा बैटिंग और उससे भी अच्छा रनिंग बिटवीन द विकेट, लाजवाब 2 रन चुरा लेंगे। दोनों ही सलामी बल्लेबाज अभी तक दोनों ही सलामी बल्लेबाज ही खेल रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि ड्राइविंग सेट जो कंप्लीट डोमिनेंस से हम बता रहे थे बार बार की वही चीज को मैं चाहूंगा कि ड्राइविंग सेट पर नजर आ रही है अभी तक आंध्र प्रदेश। लेग साइड पर थी, कोशिश की थी फील्डर ने वहां पर, लेकिन सिंगल, आखिरी गेंद पर सिंगल। और
10 ओवर समाप्ति के बाद स्कोर हो गया है 144 बिना किसी नुकसान पर। और अभी हम जाएंगे ड्रिंक्स ब्रेक की तरफ। 10 ओवर खत्म होने के बाद आंध्र प्रदेश ने स्कोर किया है 145 बिना IndusInd कोई Bank has नुकसान। दोनों ही contributed to बल्लेबाज India's growth by अभी क्रीज serving पर over मौजूद है। 41 million customers through 3,000 plus branches and ATMs, transforming over 2.5 million lives through its inclusive banking and community initiatives. From supporting Paralympians to championing blind cricket, we continue to celebrate strength beyond boundaries. दस ओवर खत्म होने के बाद अगर स्कोरबोर्ड की तरफ रुख किया जाए तो 145 145 दोनों ही सलामी बल्लेबाज अभी तक है क्रीज पर। आंध्र प्रदेश की मीका 70 रन पर बल्लेबाजी कर रही है और उनके साथ करुणा कुमारी वो भी 67 रन पर बल्लेबाजी कर रही है। क्या यहाँ से मोमेंटम जो शिफ्ट होने की बात हम कर रहे हैं, जैसे कि हम पहले ही बता रहे थे कि अभी तक ऐसा नहीं लग रहा है कि गेंदबाज के पास कोई भी गुंजाइश है विकेट लेने की, लेकिन अगर यहाँ से एक दो विकेट ना आए तो फिर ये दिक्कतें हो सकती है आगे जाकर, क्योंकि दोनों ही ओपनर सेट हो चुके हैं यहाँ पर। और शॉट सिलेक्शन जिस हिसाब के हम बात कर रहे हैं शॉट सिलेक्शन की, वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से हो रहा है। तो फिर आगे जाते जाते जब तक मैच, जी हाँ, यहाँ पर भी सिंगल आएगी। गेंदबाजी का स्तर जो है अभी तक वो कोशिश कर रहे हैं विकेट लेने की, लेकिन कोई भी गुंजाइश नहीं है। 148 11 ओवर का खेल अभी चल रहा है। करुणा कुमारी मीका दोनों ही हावी है पहले
बल्लेबाजी की साइड से, और गेंदबाज के पास कोई उतना मौका नहीं है अभी तक। तो इस मैच के बारे में अगर हम रुक करें, और ये लेग साइड पर गेंद थी, सिंगल जरूर मिलेगा वहां पर। मोमेंटम के बारे में हम बता रहे थे कि अगर हाथ से एक विकेट कहीं से भी मिल रहा है तो फिर हो सकता है कि रन आने की, जिस हिसाब से रन आ रही है अभी तक, कहीं से भी रोक लगाने की जो प्रयास कर रहे हैं विपक्षी बिहार के गेंदबाज, क्या वो हो सकता है। लेकिन हाथ पर स्कोर हो चुकी है, 150 रन पर आ गई है स्कोर बिना किसी नुकसान पर। सलामी बल्लेबाजी हावी हो चुकी है, और करुणा कुमारी और मिका दोनों ही जिस हिसाब से खेल रहे हैं, पहले मिका हावी हो रहे थे, स्विप शॉट और रिवर्स दोनों के इस्तेमाल से स्कोर को आगे ले जा रही थी, लेकिन उसके बाद करुणा कुमारी भी कहीं से भी पीछे नहीं है, मतलब वो भी मिका की उतनी ही साथ दे रही है। तो फिर इसका रिजल्ट आप देख सकते हैं स्कोर बोर्ड पर। हाँ, सिग्नल जो है एक चीज होती है, मतलब इस फॉर्मेट की बात अगर हम करेंगे तो फिर हर एक गेंदबाज जब गेंदबाजी करने के लिए आती है उन्हें भी सिग्नल देने की ज़रूरत है, कॉल देते हैं, और फिर बल्लेबाज शॉट खेलते वक्त वो भी कॉल देते हैं, और फील्डर्स जो है वो थ्रो करते वक्त वो उन्हें भी कॉल देना होता है। और धन्यवाद देना हम चाहेंगे इंडसलैंड बैंक को, जो इस इतनी बड़ी नेशनल लेवल की जो टूर्नामेंट है उसको स्पॉन्सर कर रहे हैं, और विजुअली इम्पैक्ट जो प्लेयर्स हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और उनके लिए जो कुछ भी फैसिलिटीज़ है और खेलने के लिए जो चाहिए हर एक चीज़ को वो सपोर्ट कर रहे हैं, और आगे बढ़ने की जो गुंजाइश है उनके पास, और क्रिकेट के माध्यम से वो अपना जो पहचान वो क्रिएट कर रहे हैं, उसके लिए निश्चित रूप से आभारी रहेंगे इंडसलैंड बैंक। थैंक यू सो मच। और उड़ीसा में इतना बड़ा जो टूर्नामेंट हो रही है यहाँ पर, पहला मैच हमने देखा उड़ीसा की जो टीम थी महिलाएं, उन्होंने अच्छी खासी विक्ट्री हासिल की है, लेकिन उसके बाद हम दूसरी मैच ये ये दूसरा मैच चल रहा है यहाँ पर आंध्र प्रदेश और बिहार के बीच। टॉस आंध्र प्रदेश ने जीता था, फिर बल्लेबाजी की फैसला करने के बाद अभी तक 11 ओवर खत्म होने के बाद 154 पर पहुंचा दिया है अपने स्कोर को। दोनों ही ओपनर्स अभी तक इतने आसानी से अपने काम को किया है, अगले जो बल्लेबाज है उनके लिए शायद दिक्कत नहीं होगी। ये वाइड गेंद काफी ज्यादा बाहर थी लेग स्टंप पर। सिंध आई है नई बॉलर, पहली ओवर है उनकी, क्या कुछ हो सकता है यहाँ पर। क्या गेंदबाजी में जो परिवर्तन की है कैप्टन ने, अधिनायक ने यहाँ पर सोचा है कि अगर गेंदबाजी पर अगर कोई नया बॉलर आए तो फिर क्या हो सकता है कि हमें विकेट प्राप्त होगा या फिर नहीं होगा, ये तो दूसरी बात, लेकिन यहाँ पर 2 रन मिल गए हैं। काफ़ी ज़्यादा बाहर है लेग स्टंप से, और फिर से दोबारा उसको डालने की कोशिश करेंगे बॉलर, लेकिन वही चीज़ हम बता रहे थे कि एक्स्ट्रा जो है वो कितना इम्पैक्ट डालेगा, क्योंकि अभी तक जो भी रन्स आए हैं बल्लेबाजी हुई है जिस हिसाब से, हर एक रन का ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर बैट से आए हैं, लेकिन एक्स्ट्रा जो आया हुआ है और वाइड से थोड़ा बहुत उतना नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों ही बल्लेबाज को आप जितना भी मतलब प्रशंसा कीजिए वो कम रहेगा। लगातार वाइड्स आ रहा है यहाँ पर, कुछ अलग इंटेंशन के साथ आए थे, गेंदबाजी करने के लिए आई थी सिंध ने, लेकिन अभी तक उनका जो प्रभाव है उतना दिखाई नहीं दिया है।
फिर हाँ, इस बार लेग स्टंप पर गेंद थे, लेकिन उसको अच्छे डायरेक्शन पे खेला है। सिंगल के लिए जरूर जाएंगी दोनों ही बैटर। 11 ओवर खत्म होने के बाद ये 12 ओवर चल रही है यहाँ पर। दो ही गेंद हुई है, लेकिन 160 पर पहुंच चुकी है स्कोर। आंध्र प्रदेश हावी है अभी तक, और गेंदबाज कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि हाँ विकेट आने की जो, अरे ये ऐसा लग रहा है कि खिलवाड़ हो रहा है। और गेंदबाजी गेंदबाज कोशिश कर रहे हैं कि विकेट की लाइन पर गेंद को रखने की, और लेकिन ऐसा हो रहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा बाहर लेग स्टंप की तरफ जा रही है हर एक गेंद। लगातार वाइड, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि एक्स्ट्राज उतना भी नहीं हुई है इस मैच में, लेकिन इस ओवर के बारे में अगर बात किया जाए तो फिर काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है एक्स्ट्राज, खास करके वाइड और लेग स्टंप के दिशा पर ही काफ़ी हुआ है। फिर से वही गेंद, फिर से उसी तरह का रिजल्ट। और ये एक्स्ट्रा की मतलब आप कह सकते हैं कि बाढ़ होगी यहाँ पर। अभी पहले जब बल्लेबाजी चल रहा था तो बल्लेबाज रन के लिए कोशिश कर रहे थे, और उनकी जो एफर्ट्स थी बल्ले के साथ गेंद का कनेक्शन हो रहा था, और फिर स्कोर्स की जो स्कोरिंग रेट जो था वो काफ़ी अच्छा था। लेकिन उसके बाद ये ओवर जो है वो, हाँ, काफ़ी देर से एक अच्छी गेंद हुई है यहाँ पर। रनिंग बिटवीन द विकेट के बारे में अगर बात किया जाए तो फिर क्या खूब खेले हैं दोनों ही प्लेयर्स, दोनों ही ओपनर्स, दोनों ही सलामी बल्लेबाज है, और अपनी इनिंग्स को वो अच्छी तरीके से समझकर और मैच की जो इम्पोर्टेंस है उसको सोच रहे हैं। और गेंदबाज की हर एक गेंद को अच्छी तरीके से पढ़ने के बाद वो ऐसे कर रहे हैं, मतलब हाँ, आप देख सकते हैं शॉट सिलेक्शन, जब देख रहे हैं कि लेग स्टंप पर गेंद है उसको स्वीप कर रहे हैं, मिड विकेट, पॉइंट, मिड ऑन, हर एक दिशा पर शॉट्स खेल रहे हैं। और जब देख रहे हैं कि ऑफ स्टंप पर गेंद हुई है तो काफ़ी कुछ रिवर्स आया है, लेकिन उसके अलावा ऑफ स्टंप की गेंद को वो खेल रहे हैं पॉइंट की दिशा पर, कवर की तरफ खेलने की कोशिश अभी तक तो चल रहा है। प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स नजर आ रहा है। 12 ओवर धीरे धीरे वो समाप्ति होने के और, हाँ, रिवर्स की बात मैं कर रहा था कि रिवर्स आई यहाँ पर, क्या खूब आई है, फील्डर कोशिश किए थे वहां पर, लेकिन 4 रन की बढ़त हो जाएगी जरूर। करुणा कुमारी, आप देख सकते हैं अगर स्कोरबोर्ड की तरफ देखेंगे, 80 रन पर 80 रन पर नाबाज है, और उनके साथ मिका। फिर से वही गेंद, वही समान रिजल्ट। लगातार लेग साइड पर गेंदबाजी हो रही है और लगातार वाइड आ रही है, ऐसा लग रहा है कि मतलब बल्लेबाज, बारहवीं ओवर जो है वो ऐसा लग रहा है कि बल्लेबाज
उनको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन गेंदबाज एक्स्ट्रा से उतने रन दे चुके हैं कि अगर बाउंड्री आ जाती तो फिर उतना भी दिक्कत नहीं होती, लेकिन बहुत महंगा हो चुकी है ओवर, खास करके काफ़ी ज़्यादा डाली है इस ओवर में वाइड। हाँ, ये ऑफ स्टंप पर गेंद और शायद ये खत्म हो जाएगी ओवर। जी हाँ, सिंगल आई है इस ओवर, इस गेंद पर, आखिरी गेंद पर सिंगल, ओवर की समाप्ति। 12 ओवर समाप्ति के बाद 177, 12 ओवर समाप्त होने के बाद आंध्र प्रदेश वुमेन क्रिकेट टीम ने 177 स्कोर की है बिना कोई नुकसान पर। IndusInd Bank has contributed to India's growth by serving over 41 million customers through 3,000 plus branches and ATMs, transforming over 2.5 million lives through its inclusive banking and community initiatives. From supporting Paralympians to championing blind cricket, we continue to celebrate strength beyond boundaries. दोनों ही सलामी बल्लेबाज, दोनों ही आज से यार ये चौका मिल जाएगी यहाँ पर। देखा वहां पर छोटी सी दरार थी और उसको भेज दिया है बाउंड्री के लिए। 4 रन की बढ़त हो गई है। अमिका B2 कैटेगरी से और करुणा कुमारी जो है वो B1 कैटेगरी से बिलोंग कर रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पर 3 कैटेगरीज होते हैं। विजुअल इम्पैक्ट जो प्लेयर्स है B1, B2 और B3 एंड B3, 3 कैटेगरी से प्लेयर्स होते हैं। B1 की जो प्लेयर्स है वो कम से कम 4, आप आपकी टीम से 11 प्लेयर से B1 कैटेगरी के प्लेयर को 4 ले सकते हैं टीम में, और फिर B3 के जो प्लेयर्स है वो मैक्स ज़्यादा से ज़्यादा 3 प्लेयर आप खिला सकते हैं आपके टीम में। यहाँ पर दूसरी गेंद पर दूसरी चौका आ चुकी है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है अभी ऐसा लग रहा है कि गेंद जो है वो फुटबॉल जैसा नज़र आ रहा है शायद। रिवर्स की कोशिश थी, फील्डिंग करने की कोशिश, लेकिन सिंगल जरूर ले लेंगे दोनों ही सलामी बल्लेबाज। 12 ओवर समाप्त हो चुकी है और ये 13th ओवर की खेल अभी तक चल रहा है, लेकिन कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि गेंदबाज के पास कोई भी चांस था विकेट लेने की। लेकिन बल्लेबाजी की है दोनों ही सलामी बल्लेबाज अपनी काम को और जो रेस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी गई है अच्छी खासी निभाई है अभी तक। आंध्र प्रदेश और बिहार के बीच ये दूसरी मैच चल रही है यहाँ पर नीमपुर क्रिकेट ग्राउंड पर। आंध्र प्रदेश वुमेन क्रिकेट टीम लाजवाब क्रिकेट के साथ, लाजवाब बल्लेबाजी के साथ स्कोर जो है उसको 188 रन्स आने की जो गति है, जिस हिसाब से रन्स आ रहे हैं, फील्डर्स के एफर्ट्स काफ़ी अच्छी है यहाँ पर, लेकिन गेंदबाजी उतनी अच्छी नहीं हुई है कि इफेक्टिवनेस नज़र नहीं आई है गेंदबाजी में कि विकेट आ सके शायद। और अभी तक तो दोनों ही सलामी बल्लेबाज सेट हो चुकी है और रन की गति जो है वो धीरे धीरे शायद जैसे ही ओवर आगे चलेगी तो फिर जो गुंजाइश है रन जिस हिसाब से अभी तक तो आया है वो शायद आगे जाकर बढ़ जाएगी फिर। एक 199 और 2 रन की बढ़त
191 13th ओवर ख़त्म हो गई यहाँ पर और 191 स्कोर हुई है आंध्र प्रदेश वुमेन क्रिकेट टीम की। IndusInd Bank has contributed to India's growth by serving over 41 million customers through 3,000 plus branches and ATMs, transforming over 2.5 million lives through its inclusive banking and community initiatives. From supporting Paralympians to championing blind cricket, we continue to celebrate strength beyond boundaries. रिवर्स की कोशिश थी वहाँ पर, फील्डिंग अच्छे थे लेकिन फिर भी एक रन चुरा लिए दोनों ही बल्लेबाज। क्या हो सकती है अगर बल्लेबाजी की बात किया जाए तो फिर उनका तो कोशिश यही है कि विकेट निकालने की, लेकिन मैच के नज़रिए से देखा जाए तो फिर शायद कम इफेक्टिवनेस बॉलिंग गेंदबाजी में वो डेप्थ नज़र नहीं आई है अभी तक। रनिंग बिटवीन द विकेट के बारे में अगर बात किया जाए तो काफ़ी अच्छी हो गई है। स्कोरिंग रेट, पहली बात तो ये कि बल्लेबाज हर एक लूज गेंद को खेल रहे हैं बाउंड्री के लिए, और जब देख रहे हैं कि अच्छी गेंद है उसको प्लेस कर रहे हैं अच्छी दिशा की तरफ, और एक दो रन जो आने चाहिए, कोई भी दिक्कत मतलब कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ रहे हैं, हर एक गेंद पर कोशिश कर रहे हैं रन आने के लिए। प्लेसमेंट बहुत ही बढ़िया थे लेकिन खूबसूरत फील्डिंग एफर्ट के बावजूद भी उन्होंने सिंगल चुरा लिए हैं। एक बार फिर हम धन्यवाद देना चाहेंगे इंडसलैंड बैंक, उनकी जो एफर्ट्स है जिस हिसाब से वो स्पॉन्सर कर रहे हैं, और कोशिश यही है कि इस टाइप के क्रिकेट को विजुअली इम्पैक्ट जो प्लेयर्स हैं उनके लिए वो कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें कैसे प्रमोट किया जाए, और उनकी जो खेलने की एबिलिटीज़ है, उनके पास जो टैलेंट है वो देश के सामने लाने की कोशिश हो रही है। और आप देख सकते हैं कि इसका रिजल्ट आपके सामने। IndusInd Bank has contributed to India's growth by serving over 41 million customers through 3,000 plus branches and ATMs, transforming over 2.5 million lives through its inclusive banking and community initiatives. From supporting Paralympians to championing blind cricket, we continue to celebrate strength beyond boundaries. मिका करुणा कुमारी, मिका जो है वो B2 कैटेगरी से और करुणा कुमारी B1, और दोनों ही अभी शतक की तरफ अग्रसर है। और हाँ, कोइंसिडेंस ये है कि दोनों ही 92 पर ही बल्लेबाजी कर रही है। हाँ, रिवर्स की कोशिश थी वहां पर,
सिंगल जरूर मिलेगी, लेकिन टॉस के वक्त आंध्र प्रदेश के जो कैप्टन थी वो बता रही थी कि हम 200 के आसपास स्कोर देख रहे हैं, लेकिन अभी अभी भी 6 ओवर बाकी है, लेकिन 203 हो चुकी है स्कोर। हाँ, ये दिक्कत तो हुई हुई है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो गेंद है वो लेग स्टंप की तरफ गई है, तो एक्स्ट्रास की जो संभावना है वो बढ़ गई है। और एक्स्ट्रा आने से क्या दिक्कत होती है कि आपको दूसरी गेंद, एक गेंद एक्स्ट्रा डालनी पड़ेगी, और फिर स्कोर जो है वो बिना किसी एफर्ट के गेंदबाज कोशिश कर रहे हैं विकेट लेने की। वो चाह रहे हैं कि गेंद को ऑफ स्टंप और मिडिल स्टंप तीनों स्टंप पर रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चूक हो रही है। और ये जब लेग स्टंप की ओर जा रही है तो फिर एक्स्ट्रा में जो स्कोर ऐड हो रहा है ना, बिना कोई एफर्ट से, और बैट्समैन के लिए खुशी खुशी काफ़ी अच्छा शॉट वहाँ पर, उतनी ही अच्छी फील्डिंग हुई थी। करुणा कुमारी अभी 94 पर बल्लेबाजी कर रही है, और उनके साथ मिका, वो भी सेम ही स्कोर के साथ 207 रन, 207 रन आ गए यहाँ पर स्कोर। एक चीज़ पर आपको ध्यान देनी होगी, करुणा कुमारी जो है B1 कैटेगरी से, उनकी जो स्कोर है वो डबल होती है। अगर वो 1 रन के लिए जाती है तो फिर वो डबल होके आड़ होगी, और अगर वो 4 रन मार ले तो फिर वो 8 रन काउंट होती है। ऑफ स्टंप पर गेंद थी और उसको अच्छी खासी तरीके से प्लेस किया है, लेकिन कवर पर फील्डर, सिंगल जरूर मिलेगी। और ये जो एक है वो हम इसको 2 गिना जाएगा, क्योंकि करुणा कुमारी जो है B1 कैटेगरी से, उन्होंने सिंगल ली है जरूर, लेकिन वो 2 रन होकर अपनी बोर्ड पर आड़ हो जाएगी। B1 कैटेगरी के प्लेयर्स मिनिमम आप 4 प्लेयर ले सकते हैं अपनी टीम पर, लेकिन B3 कैटेगरी के जो प्लेयर्स है मैक्स टू मैक्स आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 प्लेयर खिला सकते हैं। कोशिश की थी वहां पर बाउंड्री रोकने के, लेकिन 4 रन की बढ़त हो जाएगी फिर। ओवर समाप्त, ओवर खत्म हो गया यहाँ पर। 213 रन, 15 ओवर IndusInd समाप्ति के Bank has बाद contributed 213 to रन हुई है India's आंध्र growth by प्रदेश वुमेन्स serving टीम over की। 41 million customers through 3,000 plus branches and ATMs, transforming over 2.5 million lives through its inclusive banking and community initiatives. From supporting Paralympians to championing blind cricket, we continue to celebrate strength beyond boundaries.
We are after the last 5 overs of the first inning. This is Gaurav, and once again welcome you to as the end overs of the first inning with a no ball call from the umpire. Both of them inching closer to that 3-figure mark. We'll be reaching there soon. One on 98, the other on 99. Here we go. Karuna Kumari on 98. Swept it fine. Takes the single. Moves on to 99. In fact, with that single, it will be double, of course, for the B1. And it is Karuna Kumari with a century. With 100 that she remembers for a long, long time. A fantastic inning this. Well done, Karuna Kumari. The second century of the tournament in the second match itself, coming from a B1 player, tells you about the intensity with which they are batting. And now it's time for Mika. There it is. The right arm raises to the sky, and rightly so, because that is a top-class 100. 100 from 51 deliveries. Both the openers are now the centurions for Andhra Pradesh. Wow, they're flying. They're flying high. What a tournament. What a match so far for Andhra Pradesh. 220 already on the board. And they're not stopping at all. They've been unstoppable. The Jagannath goes on for Andhra Pradesh. Another 2 runs added to the total, and rightly so. The projected score says 283. Mind you that it will be huge. It will be really huge. Powerful shot. Powerful shot. Go and stop that, he says. It will be stopped at the deep though. It will be just a single. We're deeply analyzing what these two batters have done and why they're so successful. There are two aspects of it. One is that Bihar bowlers, without being a little critical, I have to say that Bihar bowlers have been a little predictable with their approach. What they're doing so far is the line has been either way outside the off stump where reverse is easier, or outside the leg stump where this particular sweep that the batters played right now becomes inevitable. Nothing on the wicket, nothing on the stump. And once it is on the stump, I know that sweep is a shot that is on, but still it will be on the sort on the riskier side to play that. And I do believe that this is why Bihar missed the trick there. IndusInd But on Bank the has other side, contributed if to you look at what India's the batters growth by have done so serving well, over 41 and they're million batting on customers 3-figure through marks, 3,000 plus 104 branches for and one, ATMs, 101 for transforming the over other, 2.5 is that, million lives through its inclusive they picked the banking spot and really well. community I mean, initiatives. From supporting Paralympians to championing they know blind where the cricket, we fielders continue are. to celebrate strength beyond Playing boundaries. the shots in between the gap, playing to the merit of the ball. Outside the off stump, no point playing that for a sweep shot. Be it the reverse, be it it looks like it's a
Satyavati. Chandrakala and Satyavati, two of the newer batters now. After that, both of them got retired hurt, but done their job. You probably want to save the energy. I don't know exactly what has happened, but both the batters are retired hurt. Chandrakala, B1, another B1 players. Just getting up the mark with that. 225 mammoth total. 227 with that. Let's see how the finishing overs is going to be the last few overs. 4 overs to go, 3.4 to be precise. Another single added to the total. Interesting is to look at what the bowlers have done so far. Sanam Mahali, 2 overs 32 runs. Sangeeta, 3 overs 34. Preeti Kumari, 25 from 2 overs. Sakshi Kumari, 2 overs 23. Anu Kumari, 3.2, 37. Pretty expensive. Priyanka Kumari, 31. 2 overs 15 per over. Too much. 1 overs 23 runs for Roman Kumari as well. So this tells you that most of the bowlers have been pretty expensive and can't stop a unit like Andhra if one of the bowlers at least don't bowl miserly. I think that is where they miss the trick. On the slow side, powerful shot, there's protection there. Only a single on that. This tournament is brought to you by IndusInd Bank, we all know that. Of course, Government of Odisha, Department of Sports and Youth Service have been overwhelming support. We'll talk about that. Another boundary. Cracker up a shot again. It just goes on and on. You watch Andhra Pradesh bat, you almost feel like you're watching a highlight of a cricket match. That's not the case. They're going at 14.10 per, and with that they're going to 14.10. Shot, not really well timed. Imagine this being a GDP of a country. That will be huge. 14.10. Little time to thank God. Of course, and Department of Sports and Youth Service for their overwhelming support over the years for promoting cricket for the blind. Of course, Odisha, the home team right now. 18 teams have been grouped based on their performance in the previous national tournament. This edition marks the 6th edition of the National T20 Cricket Tournament for the visually impaired women cricketers. Madhya Pradesh was defending champions. Who's going to be lifting the trophy this time? Early days, first day of it. And we have already seen glorious performances. 3 centuries already. The centuries running everywhere. The tournaments that we have covered, 30 games, 40 games, no century. Here is the tournament. In 2 games, we've got 3 centuries. Batsman's paradise. IndusInd Bank has contributed to India's growth by serving over 41 million customers through 3,000 plus branches and ATMs, transforming over 2.5 million lives through its inclusive banking and community initiatives. From supporting Paralympians to championing blind cricket, we continue to celebrate strength beyond boundaries. Another shot, gentle. 1 run added to the total. And wants to come back for the second. There we go. And it will be 4 runs. Yes, B1 batter batting. The score gets doubled. If you've just joined in right now, just to tell you, in the second game of today's play, the first game
the first day of the 6th edition. And in the second game, Andhra Pradesh versus Bihar Andhra, winning the toss and deciding to bat first, put no foot in the wrong direction. 243. Kept going and going and going. Wide it is. I keep on saying that. Chandigarh batting on 8 and Satya Magupalli batting on 8 as well. Interesting will be to see how they vary the pace. No real timing on that one. Is there going to be a single? Yes, one is on. Are they coming back for the second? Yes, they're coming back for the second. Another 4 runs added to the total. That's the thing about playing B1 players. And B1 players playing well. The IndusInd Bank Women's National T20 Cricket Tournament for the Blind 2026. Some runs added to the total. We'd like to thank IndusInd Bank for their continued support. Of course, Samathanam Trust for the Disabled have been very supportive with each and every tournament that is organized by Kavi India and Kavi Odisha as well. Been very, very supportive in bringing out this tournament. Government of Odisha Tourism, Anshuman, they've all been supportive in making sure that this becomes a smooth tournament. Another single added to total. There are plenty of matches after this. Tomorrow we have Haryana versus Assam and Maharashtra versus Uttar Pradesh here in the same venue. There's another venue where the matches has been telecasted, KT Global Ground, Khordha. What is similar is both of these grounds are pretty beautiful. Picturesque stadium. Good take from the wicketkeeper, who's asking for a stumping. That is not to be. Still last ball to go. 253 already on the ball. They're flying high. They're playing like there is no tomorrow. With that, the over comes to an end. 254 without a wicket. Beg your pardon, it's 253 without a wicket. IndusInd Bank has contributed to India's growth by serving over 41 million customers through 3,000 plus branches and ATMs, transforming over 2.5 million lives through its inclusive banking and community initiatives. From supporting Paralympians to championing blind cricket, we continue to celebrate strength beyond boundaries. Powerful shot down the ground. This is a very special shot. We've seen plenty of shots to the back region of the ground. This is towards the front region of the ground. Won't be a boundary, but they're running hard. They'll be getting 4 runs from that. In fact, 6 runs. Here we go. 3 runs taken. It will be doubled up when Chandrakala, the B1 batter batting. 260 now. Or will they reach 300? That's the question right now. It's not impossible there.
Not quite. Rest away. Rest away to the fence. And the cheer is on. The Andhra Pradesh team are on fire right now. And serious that they're playing the first match of the tournament. They're playing like they play in this ground forever. Odisha batted beautifully and Andhra Pradesh saying, come on, we are not too far behind. The neighbor state of Odisha as well. Another sweep shot for a single. Yeah, the neighboring state. And Bihar will be saying they're not far too behind. I mean, of course, was the neighbor of Odisha before the division of Bihar. But plenty of people from Bihar and Andhra Pradesh stay in Odisha. And Odisha is such a multicultural place right now, particularly Bhubaneswar and Cuttack. Another single, we'll talk about that. There's something about Odisha and hospitality. It just grabs you with both hands and welcomes you with all the gratitude. It's a place for new people, a place where everybody is respected. That's why different communities, different people from different states come here and stay and do their living as well. And it looks like Andhra Pradesh, just like it happens in the other aspect of some things in Odisha, here also capitalizing on this tournament in the second game itself. "19 done, it's 267 without a wicket." IndusInd Bank has contributed to India's growth by serving over 41 million customers through 3,000 plus branches and ATMs, transforming over 2.5 million lives through its inclusive banking and community initiatives. From supporting Paralympians to championing blind cricket, we continue to celebrate strength beyond boundaries. Beautiful shot. Straight down the ground. It's going to be a single. Pace allows the ball to go straight down the ground, which is not the case later. Comes back for the second. You give them a little chance, and Andhra Pradesh at this point in time making a mountain out of a small inch given to them. 4 runs added to the total again. This is the last over, ladies and gentlemen. It's a long, long first innings. If you're watching this match from Cuttack, you very well know. Beautiful shot through cover. There's a fielder there. This is a long inning. I mean, if you are in Jagatpur at the beginning of this, particularly, you'll be moving away from Puri at the end of the first innings. That's how big this has been, or maybe for the bigger distance than that. We'll come back to that. 273, definitely the 100 is 300 is not on, but this still looks like a mammoth first inning total. A piece. This is going to be a single. All right then. This tournament keeps on producing some very special players. The 5th edition, we've seen Madhya Pradesh coming victorious, the defending champions. And already we've seen magic, absolute magic here in this tournament. We're moving towards the business end of the first inning. 3 overs, 2 deliveries rather to go. Powerful shot on the onside. The reverse comes in, dive from 2 of the fielders. And they have to rely on, of course, the hearing sense. Just to remind our viewers, there's small ball bearings, metal ball bearings inside the ball that's used, and that makes a sound. So it's the sound that does the trick, and that is why any kind of sounds from outside the ground is not quite a great thing for visually impaired cricket. It's going to be a wide. The story of the first inning, not just about big shots, plenty of wides. Plenty of wides there. 24 wides, 24 extras, 22 wides, 2 no balls. Imagine bowling, giving away 24 runs without a delivery. That's like bowling a no ball and going for 4 sixes back to back.
Gonna be 2 runs. Bihar will be thinking about coming all guns blazing in the second inning. What has happened has happened. Can they put up a fight? Can they make this match interesting? There's people watching this match on the road, very close to the ground, and they're watching it very interestingly. Beautiful shot. No chance for the fielder there. Deep fielder had no clue, and a fantastic shot from the bat of Chandrakala. In fact, it's Satya Mogupalli with that boundary. Wow, ladies and gentlemen, don't go anywhere. This is a match, a first inning that you remember for a long, long time. And with that fitting end, with that beautiful boundary, the first inning come to an end. Winning the toss, deciding to bat first. This is where Andhra Pradesh is. Take a look at the first inning score. 283 runs in the first inning. Can Bihar team come back and chase this down? Can we see some fight around? We'll soon find that out. We'll soon come back with the run chase. Don't go anywhere. Stay with us as Bihar takes on the charge in the second inning. IndusInd Bank has contributed to India's growth by serving over 41 million customers through 3,000 plus branches and ATMs, transforming over 2.5 million lives through its inclusive banking and community initiatives. From supporting Paralympians to championing blind cricket, we continue to celebrate strength beyond boundaries.
IndusInd Bank has contributed to India's growth by serving over 41 million customers through 3,000 plus branches and ATMs, transforming over 2.5 million lives through its inclusive banking and community initiatives. From supporting Paralympians to championing blind cricket, we continue to celebrate strength beyond boundaries.
Welcome back. They have a strong run chase now. A big one. A one where you go out of your comfort zone to try out if you can get to the total or not. 283. Beautiful shot on the offside. Takes a single. He wants to come back for the second, and rightly so. Now, by any mean, if there's two ways to look at it. One is, of course, as I always say, that in cricket you also learn from the oppositions. If your opposition can do it, you can do it too. That's the thing. Have to believe in yourself that in the initial overs has to be really big, not just good overs, big overs, like mammoth overs. Then you give yourself some chance of going to the total. I love to see these two batters, Anu Kumari, B1 batters, Sanam Mahali. Both these batters taking chances, and R. Priyanka, the B2 bowler, starting the proceedings, conceded 5 runs so far. What's the plan? Runner for Anu Kumari, being a B1 player, the score gets doubled, just to remind you again. Sweeps it in front of square, it goes to the mid wicket, missed by the fielder. And it's just going to be a single. In fact, so 2 runs added to the total with that because of B1. And again, powerful shot. The outfield's fast. Some chase for the fielder. He does really well. 2 more runs added to the total. Nimpur Sports and Cricket Club in the city of Cuttack. Very close with the industrial part of Cuttack. But Cuttack in particular is plenty of cricketers who want to play for Odisha. To do that through the square leg, the sweep shot, the fielder had no happening out there. Brilliant shot. Extraordinary timing on that one. And a nice way to end this over. 1 over done and dusted. It's 13 without a wicket. IndusInd Bank has contributed to India's growth by serving over 41 million customers through 3,000 plus branches and ATMs, transforming over 2.5 million lives through its inclusive banking and community initiatives. From supporting Paralympians to championing blind cricket, we continue to celebrate strength beyond boundaries. Call from the umpire.
An exciting first inning. And are we off for an exciting second inning already? We're right on track in the first 2 overs. And can we get something around that in the second? Bihar with the chase on. Beautiful shot in the gap, racing away this. And it's going to be a cracker of a shot for a boundary. Fantastic shot. And this is exactly how you need to bat inside these initial overs to be able to stay on that raunches and put up a big show in the first day of the 6th edition of this national T20 tournament. IndusInd Bank has contributed to India's growth by serving over 41 million customers through 3,000 plus branches and ATMs, transforming over 2.5 million lives through its inclusive banking and community initiatives. From supporting Paralympians to championing blind cricket, we continue to celebrate strength beyond boundaries. .37 without a wicket, 2.3. Yeah, actually going over than the required run rate. Now the problem with this kind of ranches is that you not just have to do it, you have to do it for a long period of time. And that's where the trick is. Anu Kumari holds the key. Someone who is really playing well today. We've already seen 2 B1 players flourishing. Can he get something of this kind in the second inning? That's the question out there. Now another powerful shot finds the fielder. It's going to be just a single, all right. That's one way of doing it. Andhra Pradesh played in the first, and now the fielders saying that we didn't get chance to bat. Probably this is the only way to show our skills, to bowl well, to field well, because Bihar went wicketless in the first innings. Don't forget about that. 3 overs done, it's 40 without a wicket. IndusInd Bank has contributed to India's growth by serving over 41 million customers through 3,000 plus branches and ATMs, transforming over 2.5 million lives through its inclusive banking and community initiatives. From supporting Paralympians to championing blind cricket, we continue to celebrate strength beyond boundaries. .40 without a wicket.
at the end of 3 overs. 244 needed from 102 deliveries, with required run rate of 14.35, 13.33 is what they're going at. Start up a fresh over with the conditions little suited for the batters. Batters like it when there's a bit of heat around. The bowlers like it when there is cold around. As simple as that. That's because you don't get tired. This is done in front of square. A bit of a slog sweep from the batter to get a single from that one. Now what Sanam Mahali has done for Bihar so far is that if you look at her technique and very closely what she tries to do, bottom hand very, very hard. And Annu Kumari this time going to be on strike. What's the plan for Annu? Bowling it on the stump, and Annu judging the ball well and takes a single. So there's a bit of rotation going on from these two batters. What Annu Kumari has done so well is played inside the line of the ball rather than going outside the line of the ball. That is where I think she's spectacular in that aspect, and that is why she's so successful so far. Got her! That is exactly what I was talking about. Ball it on the stump, little here and there. You get the chance of celebration of a wicket, and that is exactly what has happened. Bihar lost the first wicket, and ladies and gentlemen, after almost 2.5 hours, we finally got to see a wicket on a cricket match. That has to be a record. And of course, it's 43 for 1. IndusInd Bank has contributed to India's growth by serving over 41 million customers through 3,000 plus branches and ATMs, transforming over 2.5 million lives through its inclusive banking and community initiatives. From supporting Paralympians to championing blind cricket, we continue to celebrate strength beyond boundaries. New batter, straight away, aggressive shot. All right, the message is clear from the dressing room. Chasing 283, lost the first wicket, doesn't matter. Comes in second and straight away plays the aggressive shot. .44 for 1. Swept away. Is there any chance for the fielder? There's protection at the deep. Another single. Yeah, mentioning about Annu Kumari, and she's still there, 18 from 8 deliveries. What she managed to do here in this inning so far is to judge the pace of the ball really well. And she has done that by the sense of hearing. That is why these players are champion players. Look at this particular shot. Waited, judging the pace of the ball. Very easy to say it and very tough to do it. But these guys are doing it with ease, to be honest. Plenty of things that you can really learn from these players. The athletic part of their batting as well. Something that has been very exciting. The IndusInd Bank Women's National T20 Cricket Tournament for the Blind 2026 starts from today to the 22nd of 2026. Like to thank our sponsors. Run out chance meanwhile. Well home. Our main sponsor IndusInd Bank. And of course, Samarthanam Trust for the Disabled has always been there, a constant support as far as cricket for the visually impaired is concerned. Of course, we have Anshuman, we have the Cabby India, the Cabby Odisha, Government of Odisha and Odisha Tourism. This is where I think it has been fantastic.
Another shot played in the right direction. And 50 comes off for Bihar with that. So finally 50 comes off within fifth over. They still have a mountain to climb, and it's just not a normal mountain. It looks like Mount Everest, if not bigger than that. Waited and waited for that. Managed to pick up another single. So game of singles on. And I'm particularly amazed by one fact. One is the exuberance with which these batters went about the business in the first innings, and then coming on, knowing that they have a huge total in hand, and trying to be very aggressive with their approach with the ball. Yes, they've conceded few runs, but it's always a attempt to pick up a wicket. That is why they've not left the stump at all. Something that you will learn. Anyone watching, any youngsters watching, visually impaired cricketers listening to this, watching to this is something that they can learn. And plenty of scope if you're in Odisha and we want to be a cricketer, and you're watching us from all around the globe, from all over the world, then you must know that you're not far behind. If that energy is there, that exuberance is there, of course you can make it to this level. 5 overs completed, it's 53 for 1. IndusInd Bank has contributed to India's growth by serving over 41 million customers through 3,000 plus branches and ATMs, transforming over 2.5 million lives through its inclusive banking and community initiatives. From supporting Paralympians to championing blind cricket, we continue to celebrate strength beyond boundaries. Oh, they're all going up here. What has happened? They're cheering. They're cheering like they've wanted something big. And rightly so. The wicketkeeper's delighted. Wow. It's... 53 for 2, the latest one, Satya Mugupalli to Anukumari. And of course, trying to slog sweep at the mid-wicket. Got run out. Run out by Sunita, the B2 fielder, doing a tremendous job. 53 for 2 now. With every wicket, it goes in the favor of, Andhra Pradesh. I keep on mentioning about getting chance and making it big. The 4 players played in that popular World Cup this year, 2025 Women's World Cup. Fuller Soren in particular. Soren, all-rounder, and was the player of the final. The player of the match. And of course, Basanti Hasda managed to get a century today as well. Was the player of the match in the semi-final. Jamuna Rani Tudu played a very crucial role in lifting that trophy as a bowler. And not to forget the wicketkeeper Parvati Marandi, who's contributed to the team's title victory. And of course was well recognized by the government of Odisha straight away. Appreciation from the government of Odisha, from the Honorable Chief Minister. Of course, he said it is a matter of pride for Odisha, as this feat has brought the state in the national focus in sport. And that is why I think this championship will have its own importance, because it will create players in between the game. The championship provides a vital platform for the players to give their best and demonstrate their cricketing talent. The support from IndusInd Bank has been instrumental
and is a key driver behind the growth of women's cricket for the blind in India. This continued commitment has made a meaningful difference in empowering women and transforming lives through cricket for the blind, is what Dr. Mohantes said about, who's the chairman of the Cricket Association for the Blind in India, said about this particular tournament. Over the past years, there has been tremendous momentum around women's cricket. National level tournaments play a crucial role in identifying, nurturing new talents to represent India. The Indian women's team World Cup victory has made the nation proud, and all 16 players from the World Cup squad are participating in this national championship, of course representing their respective states. And that is why I think another reason towards this tournament, these champion players up against each other. Just to make it a little relevant for you, you've seen the greats of the Indian cricket, Rohit Sharma, Virat Kohli, they all play under one roof, Team India. But once the game is over, they come to different franchises and play against each other. That creates fun. That creates the fan base. Something like this can happen to this tournament, and that is why. Take a look at this tournament. Meanwhile, another wide. Just to remind you about the history of the tournament, last time it was Madhya Pradesh who lifted the trophy. And if I'm not wrong, in 2022 it was Karnataka. Who is going to be this year's champion? Is it Odisha? Is it Andhra Pradesh? Odisha the hot favorite. There's no doubt about that. But Andhra Pradesh saying, come on, if Odisha can do it, we can do it too. There's some support for Karnataka here near my com box. Let's see if Karnataka can make it again after 4 years. And with that, this over comes to an end. Of course, beg your pardon, one more over. $60 for 2, 6.1. You're going at almost 10 per over, little less than 10. 16.19. To put it very easy for you, what is happening right now is that going at a run rate that is synonymous to putting your shares and getting return out of it in the stock market. But the required run rate says they need to go with the cryptocurrency ones. Not that I'm supporting one of them. Just to put things in relevance. Very, very slow down the leg side, wide again. Trying to build up a partnership, but they have to climb something really huge here. And with each and every delivery, with not enough runs on the board, it will look like cracking the UPSC exam. Go and get that if it is possible. I wanted to hit it out of the park, didn't quite manage to get it. Outside the off stump, way outside the off stump, and straight away another call of wide. So we have Haryana facing Assam. Will be an interesting battle tomorrow, the first game of tomorrow. And the second game is Maharashtra versus Uttar Pradesh. And that will be the last game of this year's National T20 Championship for the visually impaired women cricketers. From this ground, from this very ground, then we'll move to the high-tech cricket ground, Medical College, high-tech Medical College ground in Bhubaneswar, another popular ground from Monday. Interesting, 4 new teams, Haryana, Assam, Maharashtra, Uttar Pradesh. Another day of intriguing cricket, another day, well, you'll be on your toe. $64 for 2. Just to put things into perspective, I think
this Indian team, the women's Indian team that is full of stars, very synonymous to Australia in the most popular form of cricket. And with that, a little denial, little call of no there, throw at the wrong end, and she survives with that. So single is not on, and with that, we conclude this over. 7 overs done. It's 66 for 2. IndusInd Bank has contributed to India's growth by serving over 41 million customers through 3,000 plus branches and ATMs, transforming over 2.5 million lives through its inclusive banking and community initiatives. From supporting Paralympians to championing blind cricket, we continue to celebrate strength beyond boundaries. Behind the run rate now, 66 for 2 in 7 overs. 16.77 required run rate. They need 218 runs from 78 deliveries. Once again, it's time to thank our sponsors, starting with the IndusInd Bank. The IndusInd Bank for the continued support for the visually impaired cricket tournaments in India, not just this tournament. And of course, Samathanam Trust for the disabled have been very phenomenal in terms of coming up with the support for the visually impaired cricket in India. For this particular tournament, Government of Odisha has been very supportive. And of course, Cabby India, Cabby Odisha, and Anshuman.
IndusInd Bank has contributed to India's growth by serving over 41 million customers through 3,000 plus branches and ATMs, transforming over 2.5 million lives through its inclusive banking and community initiatives. From supporting Paralympians to championing blind cricket, we continue to celebrate strength beyond boundaries. We're going to be halfway through of this inning, and falling behind, I have to say. Gives a bit of chance to talk about Nimpur Sports and Cricket Club ground. I have my own memory, plenty of memories here. I've covered plenty of matches here from 2012 onwards. 2012, this is 2026. All right, some 14 years. Doesn't look like it. It might also tell you that, or someone might be listening to this and saying, "Come on, Gaurav, you're getting old." 75 for 2. Another cracker of a shot finds the fielder. Another single. Not very significant in the context of the game. All right, the most memorable match for me in this particular venue will be the India versus Sri Lanka blind cricket. There was a international game, and I was very fond to be a part of it. Very fortunate to be a part of it. So this ground has always produced not just cricketers. I have to say cricket commentators sometimes. But more than that, I think what excites me about this ground is, as I was mentioning in the first inning, is that just to the side of the ground, you always got that the thin road where you see plenty of people around, some with their motorcycles, some with their bicycles, some with the cars even. They'll be stopping in between. Don't care about the traffic at all, but keep on watching the game of cricket. Cuttack in particular, I know that in terms of producing the conventional cricketers, not managed to do so, but they've got mad cricket fans. And not just Cuttack, I mean Odisha love cricket too much. Little surprised that we're not really made it to the big level. We can't say the same, of course, for the visually impaired cricketers, because we are the hub as far as making the visually impaired cricketers are concerned. And someone, of course, will hold the key and will always be special is Mohammad Jafar Iqbal, the president of the Cricket Association for the Visually Impaired in Odisha. Before that was a very successful cricketer for India. We call them the other men in blue. And in that phase where Indian cricket were doing so well, they've been very dominant, more like the Australians used to do. I think this man held the key, now becoming the president and doing his part of the thing and doing it so well, effectively. And coming back to the mad fans, people love cricket. I mean, be it gully cricket, I mean, be it club cricket, village cricket, any kind of cricket, people will halt around and see that and watch that cricket match. And I think this is where people outside of this city have no idea about how much these people around Cuttack love, or I'm including the rest of the cities as well, Odisha, love this game of cricket. Just because you've not produced enough cricketers doesn't mean that you're not fan of them. And you could sense that excitement again in this ground as you see plenty of motorbikes stopped in between. Of course, with that, this over comes to an end as they're going slowly, steadily. Slow and steady, not something that is not always going to be winning the race for you, especially in this match.
9 overs done. It's 83 for 2. IndusInd Bank has contributed to India's growth by serving over 41 million customers through 3,000 plus branches and ATMs, transforming over 2.5 million lives through its inclusive banking and community initiatives. From supporting Paralympians to championing blind cricket, we continue to celebrate strength beyond boundaries. Nine overs, 83 for 2. Sounds getting a little harsh on me right now. It's never the hottest place in the planet, but still is hot. The required run rate climbing up 18. 9.33 is something that they are going at. They needed to go to 18.88. Bihar need 200 runs from 66 deliveries. After this over, you'll be getting an opportunity to listen to some Hindi commentary from my co-commentator, Mr. Vivek. Beautiful shot on the onside again. Too little and too late, have to say, in the context of the game. Two identical matches in terms of what has happened. First innings, plenty of runs. Second innings, drought. It's a better effort in terms of batting, as we saw from Chandigarh in the second innings. Bihar's doing better, but still there's a complete mismatch between first and the second inning. Wow, that's a nice shot. She's trying to play a little late caught onto that delivery. And coming back, of course, I was mentioning about the crowd and the way they love this form of the game here in this ground. Take a look at these pictures. Look at the man sitting on his bike and enjoying this national T20 championship. No better place to watch a cricket match. Just before to this road, and if you come a little further, you also get a chance to eat some very tasty dahi vada aloo. Happens to be the most famous, and I don't know why it is the most famous in the world. It has to be one. Come on, there's no contest really. When there is dahi vada aloo, has to be the best dish in the world. And you ask any people from this part of the world, they say it is not a breakfast, it is not a lunch, it is not a dinner, it is everything of that kind. So every time, every situation, every problem, only one solution, and that is dahi vada aloo. So you get a chance to get under the shadow of the tree, and of course with that enjoying your plate of dahi vada aloo and this wonderful cricket match going on. Wide again, 90 for 2. $91 for 2. In between this inning,
We talked about another wide, in fact, plenty of extras delaying the victory here for themselves. We already talked about how important it is, and yeah, the president of the Cricket Association of Visually Impaired in Odisha, Kavi Odisha, we call it, Mohammad Jafar Iqbal said that Kavi is delighted to host 18 women's team, and this marks the first time a women's national cricket tournament for blind is being held in India. Wide, wide, wide. So many wides today. Imagine me taking just 1 rupee for saying one wide. I'll be a multimillionaire after this. Of course, if you count that from the first innings, plenty of wides. Imagine the umpire as well. And coming back, of course, he said thank you to the government of Odisha and Department of Sports and the Youth Service for their overwhelming support. Not just the players, of course, the support staffs, the umpires has been very good match referee. Mr. Rakesh Mishra with all the experience in the world. Very popular, of course, from the Odisha Cricket Association panel umpire. Another single. And of course, Kirti Kumar doing the score, doing the umpiring as well. This Muddappa Wainem with all-time ranking umpire. Talk about that. The crowd aspects always the best in this form. That part of the ground where with cricket you get every excitement. The geography of Cuttack allows you to do so as well. Meanwhile, a beautiful shot for a boundary. And with that beautiful shot, this over comes to an end. Ladies and gentlemen, 10 overs done, 99 for 2 it is. We'll talk more about this, and it's drinks time. IndusInd Bank has contributed to India's growth by serving over 41 million customers through 3,000 plus branches and ATMs, transforming over 2.5 million lives through its inclusive banking and community initiatives. From supporting Paralympians to championing blind cricket, we continue to celebrate strength beyond boundaries.
ड्रिंक्स ब्रेक के बाद। नाइन्टी नाइन अभी तक के स्कोर। ग्यारह ओवर की शुरुआत हो चुकी है यहाँ पर। अर्षा रन बोर्ड पर बिहार वुमेन के लिए। ऑफ स्टंप पर गेंद थी, सिंगल लेने की कोशिश, लेकिन अच्छी फील्डिंग रोमान रोमान कुमारी B2 कैटेगरी से और काक्षी कुमारी B3 कैटेगरी से दोनों ही अपराजित थे। अभी तक क्रीज पर 11 ओवर की शुरुआत हो चुकी है और स्कोर बोर्ड पर अगर देखा जाए स्कोर 100 रन हो चुके हैं, लेकिन यहाँ से 184, मतलब इसके बाद रन आउट की कोशिश वहां पर, मिसअंडरस्टैंडिंग, विकेट मिलेगी। जी हाँ, बेहतरीन थ्रो था वहां पर और तीसरी झटका लग चुकी है यहाँ पर बिहार को। सिंगल के लिए चाह रहे थे, लेकिन वहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, जिसके हिसाब से अगर देखा जाए कम्युनिकेशन अच्छी नहीं थी वहां पर। नन स्ट्राइक पर जो थे, मतलब रोमान कुमारी सिंगल के लिए चाह रहे थे, लेकिन साक्षी कुमारी ने मना किए थे उनके। 100 रन पर तीसरा विकेट बिहार के लिए। अभी भी 184 रन चाहिए यहाँ से। आखिर 10 ओवर के खेल चल रहा है यार। जिस हिसाब से मैच की शुरुआत हुई थी, पहले इनिंग्स में आप देख सकते थे कि आंध्र प्रदेश जिस हिसाब से अपनी दबदबा को जाहिर करके स्कोर को आगे लिए थे, 283 बोर्ड पर जेट दिए थे। और अभी तक के जो संघर्ष है, बिहार कहीं से भी कोशिश जिस हिसाब से कर रही है, दोनों ही बल्लेबाज। ऑफ स्टंप पर गेंद थी, कोशिश की थी उसको लेग साइड की दिशा पर खेलने के, लेकिन कनेक्शन नहीं था जो, और स्कोर वही 100 रन पर। अभी भी यहाँ से क्या करनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही बल्लेबाज अगर स्कोरिंग रेट को आगे लेने की कोशिश करेंगे तो ये ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके सामने माउंटेन एवरेस्ट खड़ी हुई है और आप कोशिश कर रहे हैं उसको पार करने के लिए। लेकिन दिक्कत क्या है, काफ़ी डिफ़िकल्ट थिंग्स जो अभी तक बल्लेबाज के लिए है कि दूसरी तरफ से गेंदबाजी उतनी सही हुई है। और इस 11 ओवर समाप्ति के बाद 100 रन 3 विकेट के नुकसान पर टीम बिहार।
IndusInd Bank has contributed to India's growth by serving over 41 million customers through 3,000 plus branches and ATMs, transforming over 2.5 million lives through its inclusive banking and community initiatives. From supporting Paralympians to championing वाइड से शुरुआत हुई है इस ओवर की। क्या ये वाइड उतना भी क्रुशियल हो सकता है, क्योंकि अगर मैच की तरफ देखेंगे स्कोर इतना बड़ा है कि अब वाइड से काम नहीं चलने वाला है, बाउंड्रीज चाहिए ही चाहिए। और लगातार अगर बाउंड्रीज आएगी तो फिर बल्लेबाजी साइड के लिए एक खुशखबरी होगी कि हाँ, रिवर्स की कोशिश थी वहाँ पर, लेकिन फील्डर क्या लाजवाब फील्डिंग हुई है। और अच्छी तरीके से कैप्टन जिस हिसाब से बॉलिंग सेट कर रहे हैं और बॉलर फील्डर जिस हिसाब से तैनात करके हाँ रिव्यू के लिए गए हैं अभी। और रिव्यू की मांग थी वहाँ पर, लेकिन ये बल्लेबाज के फर में गया है इस रिव्यू। हाँ, वही वाइड के बारे में हम बात कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा लाइक स्टंप से बाहर काफ़ी ज़्यादा गेंद है। और वही जो है दिक्कत है अभी तक, मतलब 20 ओवर के फॉर्मेट में ऐसा लग रहा है कि एक दो ओवर ऐसे गया है कि वाइड काफ़ी ज़्यादा हुई है, मतलब लगभग 2 और 3 ओवर की गेंदबाजी की है एक दो बॉलर्स ने। इस बार काफ़ी ज़्यादा बाहर, पहली गेंद जो थी वो लेग स्टंप से बाहर थी, लेकिन अब ये ऑफ स्टंप के बहुत बाहर है। और दोनों ही अगर रिजल्ट के हिसाब से देखेंगे तो फिर वाइड ही आएंगे। और दो अतिरिक्त रन जो अभी तक आया है। एक सौ चार फिर से कोशिश यही है कि कम से कम जितना हो सके स्कोर को आगे लेने की, क्योंकि सिंध जो अभी अभी नई आई है क्रीज पर, और उनकी कोशिश भी है कि उन्हें पता है कि रिक्वायर्ड रेट जो है वो 20 से ऊपर हो गई है अभी। अगर शर्ट अपने हिसाब से
नहीं आएगी। रन आउट की कोशिश थी वहाँ पर, लेकिन मिसफील्ड हुई है। ओवर थ्रू 2 रन ले लिए हैं दोनों ने। हाँ, बैटिंग कनेक्शन के बारे में हम बात कर रहे थे कि अगर यहाँ से स्कोरिंग रेट अच्छी खासी नहीं होगी, बाउंड्रीज की जो इच्छा है अभी तक दोनों ही बल्लेबाज कोशिश कर रहे हैं कहीं से भी बाउंड्रीज अगर मिल जाए तो, स्कोरिंग रेट और जो अभी तक 20 के ऊपर चला गया है वो अगर नीचे आ सके। हाँ, मैच के हिसाब से देखेंगे तो आंध्र प्रदेश हावी है ड्राइविंग सेट पर अभी तक नज़र आ रही है आंध्र प्रदेश की टीम। लेकिन बिहार की कोशिश है कि अगर मैच के आसपास ठीक है आप पहुंच पाएंगे या ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आप अगर अपनी जो नेट रन रेट उसको बेहतर करनी है तो फिर आपकी जो मार्जिन है उसको कम करने की कोशिश है कि यहाँ पर। हेलो 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 ମୋର କରିଥିଲ କି ନାଇଁ ତ ଉଠୁଥିଲା ତ ଠିକ୍ ଅଛି ତ। वाइड के सिलसिला अभी तक जारी है। आ, जैसे हम बोलते हैं ना कटक में लगातार फेस्टिवल्स आते हैं, वैसे हम देख रहे हैं कि गेंदबाज की तरफ से वाइड की वाइड, मतलब हर एक गेंद के बाद एक वाइड आता है। हाँ, ये अच्छी शेड लगी है गैप में और मिल जाएगी चौका। बाउंड्रीज जो तलाश रही है बिहार की वोमेन टीम अभी तक, उनको हर एक ओवर में दो तीन बाउंड्रीज चाहिए मैच को अपनी पकड़ में रखने के लिए। लेकिन ये ऐसा लग रहा है कि बहुत देर बाद आई हुई है एक बाउंड्री। आखिरी गेंद रहेगी इस ओवर की। इसके बाद 8 ओवर की खेल, लेकिन 170 लगभग सिंगल लेंगे यहाँ पर। आखिरी गेंद पर सिंगल। ओवर की समाप्ति। 12 ओवर खत्म होने के बाद बिहार 113 सिंगल लेकर 114 3 विकेट के नुकसान पर। IndusInd Bank has contributed to India's growth by serving over 41 million customers through 3,000 plus branches and ATMs, transforming over 2.5 million lives through its inclusive banking and community initiatives. From supporting Paralympians to championing blind cricket, we continue to celebrate strength beyond boundaries. अगर आप स्कोरबोर्ड की तरफ देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि मैच बिहार की जीतने की जो सिलसिला है अभी तक जितनी दूर है, ऐसा लग रहा है कि शायद बिहार और आंध्र प्रदेश के बीच जितनी डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस अभी स्कोर बोर्ड पर दिखाई दे रहा है कि बिहार की टीम को कम से कम लगातार वाइड, हम इसके बारे में जिक्र कर रहे थे कि अगर वाइड इस हिसाब से आ रही है तो फिर ये स्कोरिंग रेट मतलब बैटिंग टीम के लिए उतना फायदेमंद नहीं होगा, लेकिन गेंदबाज के लिए ज़रूर दिक्कतें खड़ी करेगी, क्योंकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो ओवर 6 गेंद पर ख़त्म होनी चाहिए थी वो बढ़कर 2-4 गेंद आपको फिर से डालना होगा, फिर
वही दिक्कतें होगी मैच को ख़त्म करने के लिए। इंडसइंड बैंक काफ़ी अच्छी कोशिश है उनकी, और स्पॉन्सर के हिसाब से इतने बड़े इवेंट्स को स्पॉन्सर कर रहे हैं। और कोशिश यही है कि जैसे मतलब हर एक खिलाड़ियों को उतना ही स्कोप देना होगा कि वो भी अपने पैरों पर खड़े होकर उनका जो नाम है कि नेशनल लेवल पर हो या फिर इंटरनेशनल लेवल पर। हमने कुछ दिन पहले देखा कि इंडियन वुमेन टीम जो थी उन्होंने भी वर्ल्ड कप जीता है इस फॉर्मेट में। तो क्या पता जो भी प्लेयर्स अभी खेल रहे हैं हमारे सामने, इनमें से भी कुछ प्लेयर्स निकल कर कल इंडियन टीम को रिप्रेजेंट करे, और फिर वो भी ये लोग भी वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। और अपील है वहाँ पर विकेट मिली है। जी हाँ, हम बात कर रहे थे बाउंड्रीज की, लेकिन विकेट मिल गई है यहाँ पर रनआउट पर। एक 116 पर चौथी विकेट बिहार वुमेन टीम। धीरे धीरे कर कर मैच की जो रिजल्ट है और उसका जो डिफरेंस है अभी बड़ी हो रही है। और बिहार की टीम जैसे जैसे मैच आगे चल रही है, बल्लेबाज की जो कोशिश होनी चाहिए जिस हिसाब से उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि मैच को अपने लिए अपनी तरफ खींचने की जो कोशिश है वो अभी तक नजर नहीं आई है। 117 4 विकेट के नुकसान पर बिहार वुमेन टीम 167 अभी भी चाहिए यहाँ से। ऑफ स्टंप पर दोबारा गेंद और फिर से वाइड मिलेगी। आखिरी गेंद ओवर समाप्त हुआ वहाँ पर। 13 ओवर 13 ओवर खत्म होने के बाद बिहार 119 119 4 विकेट के नुकसान पर। एक्साइटमेंट नजर आ रही है वहाँ पर। आंध्र प्रदेश के हर एक खिलाड़ी हर एक खिलाड़ी उनके पास मतलब वो कॉन्फिडेंस के साथ खेल रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अभी तक ये मैच उनके हाथ पर है। और हावी है, बिल्कुल पूरी तरह से वो हावी है बिहार के ऊपर, क्योंकि 165 वो काफ़ी बड़ा लक्ष्य है, क्योंकि उसे हासिल करना, जैसे हम पहले ही बता रहे थे कि माउंट एवरेस्ट खड़ी हुई है आपके सामने, और क्या आप उससे, हाँ, जितना भी कोशिश कर लो आपको उतना ही दिक्कतें आपको उतना ही दिक्कतें आपके सामने आएगी जब आप माउंट एवरेस्ट को चढ़ने की कोशिश करेंगे। लगभग ऐसा ही कुछ स्थिति है। ऐसा लग रहा है कि मैच उड़ीसा में है, और स्कोर बोर्ड के जो दूरी है वो लगभग बिहार के आसपास, जितना दूरी बिहार और उड़ीसा के
122 रन। ऑफ स्टंप पर गेंद, लेकिन हावी नज़र आ रहे हैं पहले। अब अगर बात करें पहले इनिंग्स की तो फिर वहाँ पर भी हावी थे आंध्र प्रदेश के प्लेयर्स, आंध्र प्रदेश के बल्लेबाज। अभी जिस हिसाब से दूसरी इनिंग्स चल रही है वहाँ पर भी गेंदबाजी की तरफ अगर रुख किया जाए तो फिर गेंदबाज भी हावी है यहाँ पर इस मैच में। हाँ, पहले इनिंग्स में आप देख रहे थे कि रन्स आ रहे थे लगातार, बाउंड्रीज हम देख रहे थे। बल्लेबाजी की तुलना में दोनों ही ओपनर्स आए और जिस हिसाब से पिटाई की वहाँ पर, हर एक गेंदबाज की हर एक गेंद को अच्छी खासी तरीके से पढ़कर बाउंड्रीज जड़ रहे थे। और फिर जब दूसरी इनिंग्स की बात आई तो लग रहा था कि कहीं से भी, जिस हिसाब से पहले इनिंग्स में हम स्कोर को देख रहे थे, ऐसा लग रहा था कि दूसरी इनिंग्स में भी वैसा ही कुछ स्कोर आएगी शायद, लेकिन फिर से गेंदबाजी लाजवाब हुई है अभी तक। रिक्वायर्ड रन रेट जो लगभग 21 था, अभी वो बढ़कर 26 के आसपास, मतलब आखिरी गेंद थी इस ओवर की। डट गेंद, ओवर समाप्त। 123 4 विकेट के नुकसान पर 14 ओवर के बाद। अपील हुई है यहाँ पर और उंगली खड़ी हुई है, इसका मतलब जब अंपायर की उंगली खड़ी होती है तो फिर बल्लेबाज को अपनी जो काम है उसको खत्म करके पाविलियन की तरफ जाना पड़ेगा। फिर आधी टीम वो अभी तक पाविलियन लौट चुकी है। 125 पर 5 विकेट। आधी रास्ता जो है अभी तक तय नहीं हुई है बिहार की तरफ से, लेकिन आधी टीम पाविलियन लौट चुकी है। अभी अगर मैच की हाल और मैच के नज़रिए से देखेंगे तो ऐसा है कि ये दूरी रह गई है कि आंध्र प्रदेश जितना जल्दी हो सके, अगर वो 5 विकेट ले ले तो फिर जल्दी से जल्दी अब मैच को ख़त्म करके दूसरी मैच के लिए उन्हें जितना भी रेस चाहिए वो मिल सकती है। क्योंकि स्कोरिंग रेट जो है, जितना स्कोर अभी से चाहिए बिहार को, ऐसा नहीं लग रहा है कि शायद ये नामुमकिन है। लेकिन क्रिकेट के नज़रिए से तो जब तक आखिरी गेंद ना हुई है तब तक हम ये नहीं कह सकते कि मैच अभी तक ख़त्म हो गया है। लेकिन आंध्र प्रदेश जिस हिसाब से अपनी गेंद को लेकर चलाया है, इस गेंद को गेंदबाजी जिस हिसाब से हुई है पूरी तरीके से, उनका जो डोमिनेंस, जिस माइंड सेटअप से वो आए थे पहले टस के वक्त, अधिनायक ने बताया था कि हम 200 के आसपास को देख रहे हैं, लेकिन वो 200 के आसपास नहीं, वो लगभग 300 के पास स्कोर खड़ी कर दी थी। फिर उसके बाद गेंदबाजी काफ़ी अच्छी तरीके से की है।
नज़र नहीं आ रहा है कहीं से भी। बिहार की तरफ से ऐसा कुछ एफर्ट नज़र नहीं आया है कि उनके बल्लेबाज हो या फिर गेंदबाज, किसी की तरफ से उतनी अच्छी एफर्ट नहीं थी कि वो मैच बना सके। कुछ रन्स आए हैं बोर्ड पर, अगर देखा जाए तो फिर वाइड में भी कुछ ऐसे रन्स आए हैं जो शायद आप जो स्कोर देख रहे हैं अभी, वो गेंदबाज की गलतियों से आए हैं। ओवर समाप्त, 15 ओवर समाप्ति के बाद 126, आधी टीम पाबीना लौट चुकी है बिहार की। 15 ओवर समाप्त, 126, 5 विकेट के नुकसान पर टीम बिहार। IndusInd Bank has contributed to India's growth by serving over 41 million customers through 3,000 plus branches and ATMs, transforming over 2.5 million lives through its inclusive banking and community initiatives. From supporting Paralympians to championing blind cricket, we continue to celebrate strength beyond boundaries. क्या है कि अगर मैच को देखे तो अभी उतना कुछ अच्छा खासा बचा नहीं है इस मैच में। 30 के ऊपर हो चुकी है नेट रन रेट, जो कुछ ओवर पहले 20 के ऊपर थी, अभी ये बढ़कर 30 के ऊपर हो चुकी है। और इसके बाद 5 विकेट अभी बचे हैं, लेकिन 157 अभी चाहिए। 127 पर आधी टीम लौट चुकी है बिहार की। आंध्र प्रदेश के बारे में हम बता रहे थे, अगर पूरी टूर्नामेंट के बारे में अगर बात की जाए तो फिर उड़ीसा टीम जो है वो काफ़ी अच्छा साइड से। और आज सुबह जो मैच हुई थी उड़ीसा ने, ऐसा था कि वो भी एक वन साइडेड विक्ट्री था उड़ीसा के लिए। और फिर अभी जिस हिसाब से आंध्र प्रदेश ने खेली हुई है, वो भी ये दर्शा रहे हैं कि हम भी इस टूर्नामेंट में अच्छी फाइट देने के लिए तैयार है। देखते हैं कौन सी साइड, कर्नाटका वो भी अच्छी टीम है, लेकिन कौन जीतेगा इस टूर्नामेंट को, ये तो जब टूर्नामेंट की जो पहले मतलब फाइनल मैच जब खेला जाएगा तभी पता चलेगा। लेकिन अभी से ऐसा लग रहा है कि आज के मैच के बारे में अगर बताएं, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश जिस हिसाब से खेले हुए, ये दोनों टीम तो अपनी तरफ से पूरी स्ट्रेंथ दिखा चुकी है कि हम लोग तैयार है इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए। दोनों ही पड़ोसी राज्य है उड़ीसा के, आंध्र प्रदेश और बिहार। बिहार और आंध्र प्रदेश के मैच के अलावा अगर हम कुछ और चीज़ों पर ध्यान दें, खास करके आंध्र और उड़ीसा, इन दोनों में अगर एक चीज़ कॉमन है तो है टूरिज्म। उड़ीसा में भी टूरिज्म काफ़ी अच्छा है। और फिर आंध्र की बात किया जाए, वो भाईजैग हो गया, फिर विजयनगर, वो कुछ भी, अब आप चाहे तो वो भी छुट्टियों में मजा ले सकते हैं आंध्र प्रदेश पे। और ऐसे उड़ीसा में भी अब बीच के साथ साथ जो मंदिर वगैरह है और नेचुरल प्लेसेस के बाद हम करते हैं, विकेट मिली है यहाँ पर। जी हाँ, सेलिब्रेशन बता रही है कि विकेट मिल चुकी है। वही बात मैं कर रहा था कि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, क्योंकि उड़ीसा जो है वो होस्ट साइड, और अभी आंध्र प्रदेश है कि वो अभी तक इस मैच में अपनी पकड़ को मजबूत की है।
127, 16 ओवर के बाद 6 विकेट अभी तक तो गिर चुकी है बिहार के लिए। रिक्वायर्ड रेट को अगर देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि मैच के बाहर है, मतलब 40 के आसपास। हर एक गेंद अगर 6 के लिए भी जाएंगे तो भी ये मुमकिन नहीं है। आखिरी के 4 ओवर बाकी है और आखिरी के 4 विकेट भी बिहार के लिए। बिहार वालों ने कोशिश की थी इस मैच को अभी ख़त्म होने के बाद यहीं से ही आपको मूव ऑन करनी चाहिए, क्योंकि अगर जितनी बार आप सोचेंगे इस मैच के बारे में तो उतना ही दुख होगा। अपील हुई है यहाँ पर, एक्साइटमेंट नज़र आ रही है पूरी तरह से। और ये जो चीज़ें जितनी बड़ी मार्जिन से आप विक्ट्री के लिए जा रहे हैं तो ये नेट रन नेट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा और काफ़ी ज़्यादा प्रभावित भी करेगा। आगे जो भी मैच आप खेलने जाएंगे, जितना भी मैच आपके बाकी है, इस नेट रन नेट के हिसाब से आप अपना जो पकड़ है पॉइंट टेबल के ऊपर, उस पर आप काफ़ी अच्छी तरीके से कुछ अलग करने की कोशिश थी। कनेक्शन हो रहा है लेकिन रन्स आने की गुंजाइश अभी तक तो ऐसा है कि बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि रन आ रहे हैं फिर भी। आखिरी गेंद रहेगी इस ओवर की। 127 पर स्कोर वहीं पर तैनात और 6 विकेट गिर चुकी हैं। 4 विकेट, आखिर के 4 विकेट और आखिरी के 3 ओवर रहेगी। इसके बाद आखिरी गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर, चौथी स्टंप पर कोशिश कर रहे हैं गेंदबाज, विकेट की कोशिश, रनआउट वहां पर। जी हाँ, मिल जाएगी एक और विकेट। ओवर समाप्त, 17 ओवर समाप्ति के बाद 127, 7 विकेट नुकसान पर बिहार। सत्तर 17 ओवर समाप्ति के बाद 127, 7 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर का खेल बाकी है और तीनों विकेट्स अभी बाकी है बिहार के हाथ में। लेकिन नेट रन नेट रिक्वायर्ड रन के बारे में क्या बताए, वो 52 पर चली गई है, 50 के ऊपर। नामुमकिन सा लक्ष्य है। ऐसा लग रहा है कि सिर्फ मैच में कुछ आखिरी के गेंद बाकी है, मतलब 17 गेंद बाकी है इस मैच में, इसके अलावा और कुछ नहीं।
वाइड गेंद, और जितना वाइड आ रहा है ना, ऐसा हो रहा है कि ये मैच की जो रिजल्ट है और स्कोर को ये तो प्रभावित नहीं करेगी, लेकिन वो थोड़ा खींचेगी मैच को। आपकी जो ओवर से वो भी डिले हो गए और मैच ख़त्म होने की जो गुंजाइश है वो भी, वहाँ पर भी दिक्कतें होगी, क्योंकि ये वाइड गेंद जो है, लेकिन इससे भी चेक डॉट गेंद आई हुई। लगातार वाइड, लगातार डॉट गेंद। लगातार अच्छी गेंदबाजी और कोशिश है कि आंध्र प्रदेश की टीम का एक कोशिश है कि अगर जितना जल्दी हो सके वो लीगल डिलीवरी के साथ अगर मैच को आगे लेकर जाएंगे तो फिर उनके पास इस मैच को बचाने के लिए सब कुछ है, क्योंकि मैच पूरी तरह से उनके हाथ पर। आखिरी गेंद इस ओवर की 129, 7 विकेट के नुकसान पर, और आखिरी गेंद पर ये डॉट गेंद खत्म है कि ओवर यहाँ पर 18 ओवर समाप्त, 18 overs गॉन। 129, 7 विकेट के नुकसान पर बिहार के ओमेन आखिरी गेंद। IndusInd Bank has contributed to India's growth by serving over 41 million customers through 3,000 plus branches and ATMs, transforming over 2.5 million lives through its inclusive banking and community initiatives. From supporting Paralympians to championing blind cricket, we continue to celebrate strength beyond boundaries. So that's the way they will be looking at it now. It's a long match. It is a very, very long match. This is Gaurav Pandya and bringing you commentary for the last 2 overs. Got an opportunity. Well, they're going up. They want this to be an all-out. 129 for 8 now. The latest of them is a run-out too. Still 2 wickets to go. And any team, you ask, when you bowl, when you actually bat that well, and of course I have to say bowl well, back up well with your bowling, then you also want the opposition to be bundled out under some total. $129 for 8. IndusInd Bank has contributed to India's growth by serving over 41 million customers through 3,000 plus branches and ATMs, transforming over 2.5 million lives through its inclusive banking and community initiatives. From supporting Paralympians to championing blind cricket, we continue to celebrate strength beyond boundaries. Matter of 2 wickets. My co-commentator Vivek was mentioning about the similarity, or I have to say that one thing that connects both of the states, Andhra Pradesh and Odisha, happens to be on the right side of things today. I think from now on, or today onwards, I have to say cricket, especially for visually impaired cricketers. Odisha and Andhra Pradesh right at the top. Bat and ball, not going to be costing anything. Now, we're now towards the end of the first day's play, and if you summarize what has happened so far, and you have to say that it's going to be setting new standards, and they're all going up. Of course, it's not going to be given. Yeah, the tournament has already set the standard very, very high in the first day itself by bringing out 3 centuries. Imagine you covering a tournament like this for the very first time in Odisha, one of its kind, first of its kind in Odisha. And the first day here in the Nimpur Sports and Cricket Club ground, famous for
plenty of extraordinary matches. You got 3 centuries today. Now you've covered plenty of matches, and we almost kind of search for centuries and you don't find one. Here is a tournament already. We've got batters just on fire. And it's not just batters. You remember what Odisha did with the ball in the first match? Bundling the opposition under 85. So the bowlers have also played their part. So if you mistakenly think that this is just another game of cricket, you come and enjoy. You make sure that you're watching quality game of cricket. That's what all these players will bring. Some very experienced campaigners, some players who played for their national sides will be there, along with the youngsters. And I usually say in tournament like this, watch out for the big stars locking horns against each other. Watch out for that excitement when you normally see, like for example, in conventional cricket, you say Virat versus Rohit, you say Sachin versus Saurav, you say Dhoni versus for Kohli for that matter, or Rohit for that matter. Gonna be a wide. So once you play under one tree, that is Team India, then nobody gonna be saying these things. But once you go and play for your different states or different franchises, then it becomes exciting, and the fan war starts from that particular point in time, and that is exactly what you expect from this tournament as well. Some superstars playing, they'll have their fans, they'll have their supporters, and with the supporters and with the fans locking horns against each other, sharing the same dressing room in that Indian dressing room, and now coming and saying, and of course like eye on eye to your friend, and you almost say that I'm better than you. And you mean it with your decisions, mean it with your performances. Very slow from the bowler. They know that they're smelling victory. Yes. The writing on the cards is left. Everything else there. Wide, wide, wide. The umpire says, hold on, you still have some time to go. Another wide. About the close set of play, and on behalf of the organizers, of course, the Cabby India, Cabby Odisha. We'd like to say our viewers, thank you for joining in. Don't forget to join us tomorrow. We have 2 more exciting matches. And after that, the change in venue. We'll go to high-tech college ground in Bhubaneswar. That is another beautiful ground. Odisha has plenty of beautiful grounds. There's no doubt about that. Yes, they're loud. They're very, very loud, Andhra Pradesh. If you forget what has happened in this match and judge the loudest team as the winner of the tournament, Andhra Pradesh winning it. No doubt about that. And looks like that is it then. All right. It's the Andhra Pradesh with a fantastic win. Completely one-sided affair in the very first match of the tournament for them up against Bihar. 138 Bihar bundling out. Not out, but been restricted under 20 overs. Andhra Pradesh. Wow. Some winning this match by 148 runs. Wow. They'll take that any day. The first day we've seen Odisha and Andhra Pradesh becoming victorious. Similar kind of a performance, similar kind of a strategy, similar kind of efforts. We've seen 3 centurions. Don't forget to join us in the post-match presentation, where we'll be, of course, talking to both the captains, and we'll see who is going to be the player of the match.
the way the openers Duncan is listening for you? Actually, Mika and Karna played very well. నేను బ్యాటింగ్ చెక్ చేద్దాం అనుకున్నాను అదే All right. I'd like to ask you about when you get so much of total in the first innings itself. What excites you to bowl that well in the second innings? Because most of the things will say, come on, that we can do whatever we want. So what keeps you grounded? Actually, we thought we want to score 200 plus, but unfortunately 280 I think, 280 or 283 I think. All right, all right. The women of but keep on performing. Well done. Thank you, sir. And everyone is waiting for that one award, the player of the match in a performance where we saw 2 centurions. It has to be one of them, and you know it is none other than Mika for 101. Congratulations, Mika. Come on. Big round. We'd like to hear something from you. To win the टीम प्रयास की, लेकिन कुछ गलतियां होती है जिस कारण से मैच एक टीम हारती है और जो अच्छा खेल जाती है वो जीतती है। तो मैं आंध्र प्रदेश टीम को जीतने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बिहार की टीम नहीं, आज की मैच हारी है कल इससे बिहार टीम को भी बहुत बहुत बधाई अच्छा परफॉर्मेंस के लिए। आज जितना तो एक ही टीम को है, तो दोनों टीम जो खेल भाव से आपने प्रदर्शन किया है, दोनों टीमों को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। Thank you so much for this batting watch. The story doesn't end here. It continues. We have 2 more matches coming up tomorrow. Don't go anywhere. Stay tuned to the YouTube channel and of course tomorrow at 9 a.m. Thank you. Do take good care.